lifestyle disorder, and it is around 9.6% as per the 2021 census. 9.6% of the population is suffering from diabetes. Now, what are the various types of diabetes, and what this diabetes is? What are the types of diabetes? Type 1 diabetes, type 2 diabetes, the most common classification. Type 1 diabetes is insulin dependent diabetes, which occurs in, which is also known as juvenile onset diabetes. Now, this occurs in the age of 10 to 15 years. Most commonly, it is diagnosed at the age of 10 to 15 years. And non-insulin dependent diabetes, comparatively, when it is diagnosed, so this non-insulin dependent diabetes, usually it is diagnosed in the age of 40 to 50 years. So, elderly group or middle-aged, it is this non-insulin dependent diabetes, and insulin dependent diabetes usually are juvenile onset, which is a insulin dependent, as the name says. So we start with a case. A 25-year-old female with a type 1 diabetes mellitus is on a multiple daily injection insulin regime. Now she presents with occasional hypoglycemia and postprandial hyperglycemia along with a slightly increased HbA1c. Now what this is, how you diagnose this? What should be the fasting glycemic level? What should be the postprandial, and what should be the HbA1c? When you diagnose it as a diabetes, कब कहेंगे हम diabetes? Fasting कितनी हो? More than 126 milligram per deciliter. 126 milligram per deciliter, then at two occasions, if the fasting blood sugar is more than 126 milligram per deciliter, that means you are going to diagnose it. Or the 75 milligram of oral glucose test you have done, or the postprandial blood glucose is more than 200 milligram per deciliter, at two occasions you can say. Or HbA1c, which is an index for, yes, for diagnosing a diabetes, 2 to 3 month glycemic control. It gives 2 to 3 months of glycemic control, and it should be, if it is more than 6.5%, if it is more than 6.5%, it indicates a diabetes. And then there is a pre-diabetic range. So here there is an occasional hypoglycemia. So when you will say the blood sugar is low, आपने sugar napi, now you need to know whether there is hypoglycemia or hyperglycemia. Hypoglycemia कब कहेंगे? You have to give something when it is less than 70 milligram per deciliter, then this is hypoglycemia, कि वो hypoglycemia में जा रहा है, ठीक है? So you have to give something, you have to give a candy or something, glucose, that to elevate the sugar level, blood sugar level. 100 to 126 is pre-diabetic, ठीक है? 5.7 to 6.5 is a pre-diabetic in HbA1c level. When you see less than 5.7%, that is normal. 5.7% is say 6.4 की range में है, तो then you can say it's a pre-diabetic, ठीक है? आपने pre-diabetic अगर आपने find out कर लिया, so then lifestyle measures are there that you have to suggest, so that he will not progress to become a diabetic. Now what happens in diabetes mellitus? So these are the cardinal symptoms of a diabetes. It is a metabolic disorder. Everybody knows this is polyuria, polydipsia and polyphasia. Because of the hyperglycemia, this glucose, when it is excreted in the urine, it may cause polyuria. Because of the polyuria, there is polydipsia, and it is usually associated with again polyphasia or increase in hunger.
So type 1 diabetes, you have type 2 diabetes, which is also known as maturity onset diabetes mellitus. And then you have this pathophysiology, which is different in both of them. Type 1, there is deficiency of the beta cells of pancreas. ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी बिहाइंड इज ऑटोइम्यून टाइप 1 में. ठीक है, और इट कुड बी इडियोपैथिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज ऑटोइम्यून. टाइप 2 के अंदर बेसिक पैथोलॉजी इज आइदर देयर इज रिलेटिव बीटा सेल डेफिशिएंसी. रिलेटिव बीटा सेल डेफिशिएंसी मतलब बीटा सेल तो डिस्ट्रॉयड नहीं है, बीटा सेल्स आपके पैंक्रियाज में काम कर रहे हैं, पर द ग्लूको रिसेप्टर, ठीक है, दैट इज नॉट सेंसिटिव. ग्लूकोसेंसर्स जो हैं आपके बीटा सेल्स की, जो ग्लूकोज को सेंस करके इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो डिफेक्टिव है. ठीक है, आइदर वो डिफेक्टिव है, इस वजह से इंसुलिन नहीं निकल पा रही है बीटा सेल से. सो दिस इज नोन एज रिलेटिव बीटा सेल डेफिशिएंसी. और देयर कुड बी अ रिलेटिव रेजिस्टेंस. इंसुलिन बन रही है, इंसुलिन है आपकी बॉडी में इनफ, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पा रही है, अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर पा रही है. ठीक है, दैट इज नोन एज रिलेटिव रेजिस्टेंस टू इंसुलिन. और इट कुड बी एक्सेस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स विच कॉजेज रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी. ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स हमारे ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि कौन से होंगे? दो मेन हार्मोन्स जो कि ग्लूकोज को बैलेंस करती हैं ब्लड के अंदर, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन इंक्रीज कर रहा है, इंसुलिन डिक्रीज कर रहा है. अदर हार्मोन्स विच आर हाइपरग्लाइसेमिक इज ग्रोथ हार्मोन, you have thyroxine and corticosteroids. Type 3 and type 4, we are not much concerned here. Type 3 is basically, it is a maturity onset diabetes of young, MODY. M-O-D-Y, we say that is maturity onset diabetes of young. मतलब elderly में हो रही है, लेकिन insulin dependent diabetes हो रही है because of the beta cell destruction, maybe because of any other cause. And type 4 is gestational diabetes. So from where this insulin is released, and this is a very important hormone, we are going to see what are its actions, कहाँ से ये रिलीज हो रही है, कौन उनको स्टिमुलेट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रही है, क्या एक्शन होता है, क्या प्रिपरेशंस होती हैं उसकी इंसुलिन की, and what all preparations, how they are different from each other, what are its uses, what are its adverse effects, what is diabetic ketoacidosis, hyperosmolar coma. So all this you will be learning, you will be understanding in this session. Okay, in the next session we will be doing oral hypoglycemic agents and some of the injectable agents. You switch off your mobiles. कहाँ से रिलीज हो रही है? पैंक्रियाज में you have all these cells, alpha cells release glucagon, beta cells release, which is the most of the you have this endocrine cells is beta cells. Now they release insulin, C-peptide, proinsulin and amylin. Delta cells, somatostatin, G cells, some of them G cells and polypeptide cells are there, that is gastrin and pancreatic polypeptide. Okay, just this is the basic physiology. Now coming to the structure of insulin. So this is a polypeptide which consists of two chains, A chain and B chain, which has 21 amino acid and 30 amino acid, total 51 amino acids. Now how it is synthesized? Synthesized from pre-proinsulin. Pre-proinsulin में you also have other signal peptide and connector peptide, that is also known as C-peptide. ठीक है, जब आपका सिग्नल पेप्टाइड रिलीज हो जाता है तो प्रोइंसुलिन बनता है, एंड प्रोइंसुलिन से जब सी पेप्टाइड रिलीज हो जाता है तो इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड फॉर्म होता है, जो कि ग्रैन्यूल्स में स्टोर होता है इन बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज. Now what is the main stimulator for insulin release from beta cells of the pancreas? Glucose is the most important. कैसे रिलीज कर रहा है? It goes to the act on the beta cells. This is the beta cells. GLUT2 transporter is there.
यहाँ से ग्लूकोज अंदर जाएगा, इट गेट phosphorylated with glucokinase. Phosphorylation will causes the ATP generation. Now ATP will causes the ATP dependent potassium channel inhibition. ठीक है, जब potassium channel will inhibited, potassium will not go outside. There will be depolarization of the membrane of the beta cells. Because of the depolarization, calcium channels will open. There is influx of the calcium ions. These granules, the insulin granules, they go and fuse to the membrane and they release the insulin. Insulin with C-peptide and amylin. amylin का क्या रोल होता है? Amylin analogs are also used in diabetes. Pramlintide, which is injectable preparation of the amylin analog, which is used. ये क्या करता है? It delays the gastric emptying and also inhibits the glucagon. ठीक है? Through a central mechanism, it inhibits the glucagon release and it also slows the gastric emptying. So this is how the insulin is released. Now this again a question comes, when you give orally glucose, the insulin release is more as compared to the when you give IV. जब हम IV देते हैं, जब हम orally glucose लेते हैं तो insulin release ज़्यादा होता है compared to जब हम IV देते हैं उसको. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब orally आपका जब meal stimulated glucose release होता है, it also stimulates the incretin release. ठीक है, इंटेस्टाइन में से कुछ इंक्रेटिन्स रिलीज होते हैं. दीज इंक्रेटिन्स आर, you have this glucagon like peptide, then glucose insulinotropic polypeptide VIP. These are the incretins. Now ये जो incretins होते हैं, they also indirectly release the insulin. ठीक है, incretin therapy is also a very important anti-diabetic agent. So you have to understand and why IV से इंसुलिन कम रिलीज हो रही है, ओरली आप ग्लूकोज ले रहे हैं तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो रही है, क्योंकि incretins which is released from the gut, they also causes indirectly the insulin release from the beta cells of the pancreas. ठीक है, so this is the most important factor, glucose. Then you have these amino acid, fatty acid, ketone bodies, they also helps in releasing the insulin. Then you have the hormones. Glucagon stimulate the beta cells and the delta cells. Somatostatin inhibits both the alpha cells and the delta cells. Hyperglycemic hormones, you have, they inhibit the insulin release. Then you have this neurotransmitters. Sympathetic is predominantly, it causes inhibition of the insulin release by the alpha 2 mechanism. ठीक है, predominant कौन सा receptors होता है? Alpha receptors are predominant in the beta cells. And alpha 2 inhibits the insulin release. Though beta increases the insulin release, but the predominant effect is the alpha effect. Vagal is, it stimulates the insulin release. Then you have other intracellular calcium, अगर ज़्यादा हो रहा है, then it will promote the insulin release. And then there's a central site, if it gets stimulated, hypothalamus, it will also evokes the insulin release. So this is all the various factors, chemical factors, you have hormonal factors, and you have the neural factors. These are the three factors which will stimulate the insulin release. Now insulin release हो गई. So this is the beta cell, alpha cells, and somatostatin delta cells. Now what is the role? We have already discussed. Glucagon will stimulate and somatostatin will inhibit. Now insulin, how does it act on its receptors? इंसुलिन के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? दे आर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर. ठीक है, इंसुलिन एक्ट ऑन इट्स टारगेट ऑर्गन्स. नाउ व्हाट आर द मेन टारगेट ऑर्गन्स फॉर इंसुलिन इज लिवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू. ठीक है, ये तीन जो होते हैं, दे आर द मेन टारगेट ऑर्गन्स फॉर इंसुलिन एक्शन. दैट इज लिवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू. कौन से रिसेप्टर्स हैं? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हैं. जब इंसुलिन बाइंड करेगा, देयर इज अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट. नाउ व्हेन द इंसुलिन बाइंड्स, देयर इज डाइमराइजेशन
and it will activate the tyrosine kinase. There is lot of phosphorylation reaction which occurs, which result in insulin action. ठीक है ना. इंसुलिन के 3 एक्शन होते हैं. एक तो रैपिड एक्शन होता है, इंटरमीडिएट एक्शन होता है, लॉन्ग टर्म एक्शन होते हैं. Rapid action are the one which is involved in the metabolic action. Intermediate action are the one which is involved in the DNA synthesis related, that is synthesis of GLUT4 transporter. So this synthesis of the GLUT4 transporter, that is a DNA mediated synthesis of the GLUT4 transporter. Now this is a intermediate action. And there is a long-term action, that is proliferation, differentiation of the cells, that is the long-term action of the insulin. ठीक है, तो 3 तरह के क्या actions हो रहे हैं. It causes, because of the phosphorylation, it causes inhibition of certain enzymes or activation of certain enzymes, which may result in its metabolic effect. These are the rapid effects. Then there is intermediate actions, that is GLUT4, this transporter synthesis. ये एक डोर होता है जो कि आपके ग्लूकोज को एंट्री करवाता है टारगेट ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, इस डोर को सिंथेसाइज करता है और ट्रांसलोकेट करता है मेम्ब्रेन में, कि जिसकी वजह से ग्लूकोज आपका एंटर कर पाए टारगेट ऑर्गन्स में. एंड इट हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज और द ग्लूकोज स्टोरेज. This is a anabolic hormone. So once it acts, now sometimes it gets degraded by internalization. This is not degradation. Now this is maximum in the liver. So maximum insulin is metabolized in the liver and then comes to kidney or muscle. Now coming to its action in the target organ, liver, there is decrease in the glucose production. So gluconeogenesis is inhibited. So remember, it decreases 2 enzymes. कौन सी 2 enzyme है which starts from P? Phosphorylase, which causes the glycogen to glucose formation. Glycogen breakdown to glucose formation. ठीक है, which will also inhibit the glucose production. So glycogenolysis will be inhibited, and another is phosphoenol pyruvate carboxykinase, which helps in gluconeogenesis. ठीक है, amino acids, free fatty acids, they all with the help of these enzymes convert into glucose in the liver. This is inhibited, this enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase is inhibited by insulin. So it decreases the glucose production. So inhibiting phosphorylase and inhibiting the phosphoenol pyruvate carboxykinase दोनों enzyme को inhibit करती है. It increases the glycolysis. It increases the breakdown of the glucose. So what all 2 enzymes it increases? Glucokinase. Glycolysis कैसे हो रहा है? With the help of glucokinase enzyme. And glycogen synthase enzyme is increased. It converts the glucose to glycogen and store it. ठीक है, तो 2 enzymes जो increase हो रही हैं, that is glycogen synthase enzyme and glucokinase enzyme. So it increases the glycolysis, also increases because of the, it causes the lipolysis, it increases the triglyceride synthesis, increases the protein synthesis. In the muscle, again, it increases the glucose utilization, glucose transport, increases the glycolysis, increases glycogen deposition, increases protein synthesis. Adipose tissue, again, increases the glucose transport, increases lipolysis, lipoprotein lipase activity, and decreases the intracellular lipolysis. So what happen in insulin deficiency? क्या होगा अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी? तो ये एक्शन थे इंसुलिन के. यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज. क्या होगा अगर इंसुलिन नहीं बन रही है तो
So there will be a catabolic effect, there will be negative nitrogen balance. There will be proteolysis, protein breakdown, muscle wasting. All this protein will be extracted into the liver. Liver will convert them into glucose, and glucose will be there in the blood. Now this glucose in the blood, what it will cause? Glycosylation of the organs. Glycosylated product, that is sorbitol, it get deposited in the organs. It may cause retinopathy, neuropathy, nephropathy and peripheral vascular disease. Okay, early atherosclerosis, all this will happen because of glycosylation. Now another important thing which occurs with insulin is वो पोटेशियम को सेल के अंदर फेंकता है. ठीक है, तो हाइपरकलीमिया में हम कभी कभी इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं. क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम को अंदर डालता है सेल के. It also inhibits the release of glucagon. So these are the three actions. कुछ सेल्स हैं जो कि इंसुलिन के इंडिपेंडेंटली ग्लूकोज एंट्री करते हैं. दैट इज लिवर में इट इज नॉट ओनली इंसुलिन डिपेंडेंट, इट इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट ऑल्सो. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड रीनल मेडुलरी सेल्स एंड द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन में कंटिन्यूअस ग्लूकोज सप्लाई चाहिए होता है बिकॉज ब्रेन डज नॉट हैव द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. And ketoacidosis will interfere with the entry of glucose in the brain. Why ketone formation occurs in insulin deficiency? Yes. Fatty acids बनते हैं. There is breakdown of the lipids to fatty acids. Fatty acids will go into the liver, form acetyl CoA, acetoacetate, and then this carboxybutyrate. That is, all these are the acetone. These are all the ketone bodies which are formed. So these ketone bodies, they will prevent the glucose. They will also causes acidosis. They will causes acidosis, they causes hyperventilation, and these ketone bodies will deprive the brain of the glucose. And then you have all the symptoms which occurs: vomiting, dehydration, hyperventilation, all these symptoms which will be there in diabetic ketoacidosis. Another important thing is exercise will facilitate the glucose entry without the need of insulin. Okay, that is also again an independent to insulin. So that's why you advise the patients to do exercise. Coming to the insulin preparations. Insulin is given parenterally. It is metabolized very fast, so it is given parenterally. You have the conventional sources were beef and pork. Now beef, you can talk outside the class. The beef is 3 amino acid different and pork is the 1 amino acid different from the human insulin. Now no longer conventional insulin is used because it was causing allergic reaction. If you want to talk, you can go outside and talk, or otherwise be quiet. Then there is highly purified pork or beef insulin. ये प्योरीफाई किए गए क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी जो कि रेजिस्टेंस कर रही थी. लाइपोडायस्ट्रोफी एज अ साइड इफेक्ट वाज देयर विद इंसुलिन, कन्वेंशनल इंसुलिन. एडवांटेज क्या था कन्वेंशनल इंसुलिन का? दे वर लेस कॉस्टली. ठीक है, बट दे आर नो लॉन्गर यूज नाउ. नाउ देयर इज, you have recombinant human insulin, which is produced by recombinant DNA technology. जो सबसे ज्यादा बात कर रहा है, can you highlight what is recombinant DNA technology? जो अभी एकदम नीचे, जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी वो एकदम नीचे देखने लग जाते हैं and they continuously talk.
What is recombinant DNA technology? Anyone? कैसे हम बनाते हैं कोई भी चीज थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? जो जीन आपको चाहिए आपने डीएनए में से निकाला, जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन के लिए आपने ह्यूमन डीएनए में से वो जीन एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड उसको आपने ई कोलाई के अंदर थ्रू अ वेक्टर, पहले आपने उसे एक वेक्टर के साथ कंबाइन किया, वेक्टर वुड बी अ प्लाज्मिड, उसको आपने ई कोलाई के अंदर एंटर किया, एंड ई कोलाई देन इट बिकॉज इट मल्टीप्लाइज and it because the gene has been incorporated into the E. coli DNA, तो आपने then you have synthesized the desired hormone or desired peptide whichever is needed. This is known as recombinant DNA technology. तो इस टेक्नोलॉजी से ह्यूमन इंसुलिन बनाए, ह्यूमन इंसुलिन वो मोर स्टेबल, मोर कंसिस्टेंट and more rapid effect was there with the human insulin as compared to this even highly purified or the pork or beef insulin. Okay? So that's why we now generally use recombinant human insulin, and even better now there is insulin analogs or designer insulin. ये जो इंसुलिन एनालॉग्स है इसको हमने फार्माकोकाइनेटिक इसकी और इम्प्रूव कर दी हमने ह्यूमन इंसुलिन की बाय मॉडिफाइंग द अमीनो एसिड्स इन द चेन, ठीक है, और उसके बाद हमने बनाए इंसुलिन एनालॉग और डिजाइनर इंसुलिन. दे हैव अ बेटर फार्माकोकाइनेटिक. So you have 3 types: highly purified pork or beef insulin, not much use but may be used in some of the areas. Recombinant human insulin and insulin analogs are more commonly used. How it is given? Subcutaneously. Most commonly it is given subcutaneously. Yes, this row, you're continuously disturbing. Yes. Stand up. Yes, I'm talking to you. Stand up. You're just the person sitting just behind you. Tell, what is roll number? Where are you seeing? Come here in the front. You are disturbing the whole class. $229. Come here. इधर आओ आगे. क्या प्रॉब्लम है? Either you go out because तुम्हारी absent mark होगी. Go out of the class. Don't disturb the class. No. You are disturbing the class. You can come in front or either you can go outside. So this, then it is affected by how you are administering the insulin. ठीक है, कैसे देते हैं इंसुलिन, आप कैसे दोगे, कैसे एडवाइस करोगे इंसुलिन? आईवी, सबक्यूटेनियस, आईएम, किस तरीके से? Subcutaneous. So all the insulin are given subcutaneously except one insulin. Which? कौन सी इंसुलिन हम आईवी देते हैं? क्या बातें हो रही हैं फिर इतनी? ठीक है, this is coming in your second internal. So be serious now. Second internal is coming. तो आईवी कौन सी देते हैं हम? रेगुलर इंसुलिन. ठीक है, एक इंसुलिन है दैट इज रेगुलर इंसुलिन विच इज गिवन आईवी. दैट इज द ओनली इंसुलिन विच कैन बी गिवन आईवी. ऑल अदर इंसुलिन इज गिवन सबक्यूटेनियसली. कहाँ कहाँ देते हैं हम, कौन सी साइट पे देते हैं इंसुलिन? एब्डोमेन. फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? एब्डोमेन से. ठीक है, बट इट शुड बी नॉट अराउंड द अम्बिलिकस बिकॉज देयर इज इनकंसिस्टेंट एब्जॉर्प्शन अराउंड द अम्बिलिकस. तो वहां नहीं देके जस्ट 2 सेंटीमीटर हम छोड़ के फिर हम देते हैं एब्डोमेन में, एंड फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन विल बी फ्रॉम एब्डोमेन, देन अपर आर्म, देन थाई एंड देन बटक्स. ठीक है, दीज आर द वेरियस साइट. टाइप ऑफ इंसुलिन, कौन से इंसुलिन दे रहे हो आप? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हो, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हो, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हो, या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दे रहे हो? इस पे डिपेंड करता है. ब्लड फ्लो, अगर आप मसाज वगैरह कर देते हैं, ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो गया तो
there will be increased absorption. That will affect the absorption. Depth, IM दे रहे हो, IV दे रहे हो, या आप सबक्यूटेनियस दे रहे हो, किस डेप्थ पे आप दे रहे हो. अगर IV दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपका फास्टर एक्शन आ रहा है कंपेयर टू इफ यू आर गिविंग सबक्यूटेनियसली. IM हम जनरली नहीं देते हैं बिकॉज देयर इज अ स्लोअर एब्जॉर्प्शन. So these are the various types of insulin. अगर हम इंसुलिन एनालॉग्स की बात करें तो अगर प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन में हम पूछेंगे तो क्या हैं 3 इंसुलिन? कौन सी 3 इंसुलिन थी जो प्रिपरेशन में आपको बतानी है? हाईली प्योरिफाइड pork or beef insulin, recombinant human insulin, insulin analogs. Now rapid acting insulin. Now एक क्वेश्चन आपके पास आएगा कि how these insulin analogs have a better pharmacokinetic compared to the human insulin. So this you're going to understand with this table. Insulin, Lispro, Aspart and Glulizin, ये सारे insulin analogs हैं. In the chain at 28 and 29 amino acid, now there is at the 28 proline is present and 29 lysine is present. Now their position has been changed and then it become Lispro. ठीक है, switch हो गई दोनों की position और Lispro बन गई. Aspartic, इसमें 28 में proline की जगह आपने Spartate लगा दिया तो बन गई insulin Aspart. ठीक है, इंसुलिन ग्लूलिजिन is becoming because of the addition of at the 23 and 28 site glutamate and asparagine. तो आपने ये जब बाइंड कर दिया उस साइट पे तो आपकी ये बन गई. अब इसमें क्या फायदा हुआ? एंड दीज ऑल आर विथ यू कैन सी S is present in them. ठीक है, तो ग्लूलिजिन is rapidly acting and glargine which is R is present here in both. This is long acting, so don't mix up. ठीक है, ग्लार्गिन को रैपिड एक्टिंग में मत लिखना. ग्लार्गिन इज लॉन्ग एक्टिंग. हियर देयर इज फास्टर ऑनसेट. विद इन 20 to 30 minutes onset is there and the peak occurs at 1 to 1.5 hour. एडवांटेज क्या है इसका? इट कैन बी कन्वीनियंटली टेकन विथ मील. It can be conveniently taken with meal, so it will not cause postprandial hyperglycemia or later hypoglycemia. Regular insulin के साथ onset क्या है? It takes around 1 hour and its peak effect occurs around 2 to 3 hours. तो जब regular insulin, it has to be advised, regular insulin जब दे रहे हैं तो advice क्या करते हैं कि 1 घंटे पहले लो या आधा घंटे पहले लो खाना खाने से. And if the patient miss the meal, that is inconvenient to take. If they miss the meal, then they'll go for hypoglycemia. And it was seen that it is causing the postprandial hyperglycemia and later on hypoglycemia. So what is the advantage of giving the rapidly acting insulin? Postprandial effect आपको मिल गया. Postprandial hyperglycemia is controlled and later postprandial hypoglycemia also did not occur when you're giving the rapidly acting insulin. Now regular insulin, the action is around 6 to 8 hours, so that's why there is postprandial, later there will be hypoglycemia. Now this is, their insulin action is prolonged by adding the zinc or protamine. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और न्यूट्रल प्रोटामीन हेज्ड ऑन, दैट इज नोन एज लेंटे and isofane insulin. Their onset is 1 to 2 hours and there is 8 to 10 hours that is peak is occurring and 20 to 24 hours is their action. ठीक है, तो we generally mix the rapidly acting insulin with the intermediate acting insulin, rapidly or short acting insulin with the intermediate acting insulin. 70 to 30 रेशियो में या 50 to 50 रेशियो में, जिससे कि एक बेसल इंसुलिन लेवल भी हो और मील स्टिमुलेटेड ग्लूकोज कंट्रोल भी मिल सके. बेसल इंसुलिन सिक्रीशन 1 यूनिट पर आवर हमारा फिजियोलॉजिकल बेसल इंसुलिन सिक्रीशन रहता है एंड मील विल स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज. ठीक है, तो हमें दोनों चीजें चाहिए.
हमें बेसल इंसुलिन लेवल भी मेंटेन करना है, जो कि मेंटेन होगा इंटरमीडिएट एक्टिंग को कंबाइन करने से शॉर्ट एक्टिंग के साथ या रैपिडली एक्टिंग के साथ, ठीक है। तो 70:30 रेशियो या 50:50 रेशियो में हम देंगे. So there are two types of regime which is given, and you have the long acting, that is glargine or detimer. Now इसमें क्या है benefit, क्या benefit है? There is no peak. तो जब आप नाइट टाइम में देंगे तो there will be no night time hypoglycemia, ठीक है, which can occur if you combining with this, because there is a peak at 8 to 10 hours. ठीक है, तो एक कंटिन्यूस लेवल मेंटेन रहेगा एंड देयर विल बी नो पीक, सो देयर वोंट बी एनी नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया और फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, ये एडवांटेज है. सो दिस यू हैव टू आंसर व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू. सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द इंसुलिन एनालॉग? बेटर फार्माकोकाइनेटिक, conveniently it can be given with the meal, there won't be postprandial hyperglycemia and later hypoglycemia, and in the night time with the long acting there won't be any night time hypoglycemia and the fasting hyperglycemia that can be there with the human insulin. The most important adverse effect with the insulin is hypoglycemia. How you have to, now this is more dangerous even than hyperglycemia. How you need to treat it? Giving the glucose, 15 to 20 gram of the glucose आपको orally देना है. Orally is not possible. Give 30 to 50 ml of the glucose IV. 50% of the glucose IV you can give, or glucagon you can give 1 milligram IV, and with or without adrenaline. Allergic reactions can occur, but it was lipodystrophy. This was more with the less purified form. Then there is edema and insulin resistance. Edema can occur because of the sodium retention, which may occur with because of the insulin effect, and insulin resistance can occur. That was also common with the less purified, not with this. The most important side effect here is hypoglycemia. The drug interaction which will be asked from you is why the insulin or other hypoglycemic drugs cannot be given with beta blockers, or what you have to be careful, beta blockers should not be given in these patients. Signs will not be present. Why? How it masks the signs? Beta 2 की वजह से tremors, anxiety, palpitation, all this beta receptor block की वजह से they won't, it won't be visible, won't be felt. And then there is this kind of gluconeogenesis by the beta effect that also be inhibited if you're giving the beta blocker. And because adrenergic activity is so high, adrenergic activity may cause hypertension, hypertensive crisis if you're giving beta blocker, because beta will block the beta 2 effect and only predominant effect will be alpha effect. Then you have to know about what are the drugs which can increase the hypoglycemic effect or which can raise the blood sugar and which interfere with the insulin action. So this you can read on your own. Then we come to its uses. कहाँ पे use होती है? All type 1 diabetes, and also in type 2 diabetes which is not controlled by diet, exercise or oral hypoglycemic drugs, in pregnancy, in stressful situations like infection or surgery, in hyperosmolar coma or diabetic ketoacidosis or gangrene of extremities, and acute hyperkalemia. Okay, these are the indications. You have these two regimes, that is split mixed regime, before breakfast and before dinner. 70 to 30 ratio. 70 is 50 to 50 रेशियो में मिक्स करेंगे या 70 to 30 रेशियो में मिक्स कर देंगे? ठीक है, आपने इंटरमीडिएट एक्टिंग डाल दी, 30 आपने शॉर्ट एक्टिंग डाल दी या रैपिड एक्टिंग डाल दी, एंड 70 आपने
इंटरमीडिएट एक्टिंग डाल दी। सो दिस आर, आपने ब्रेकफास्ट से पहले दिया, डिनर से पहले दिया, सो दिस इज स्प्लिट मिक्स रिजीम, दो मोर कन्वीनियंट टू टेक। ठीक है, 2 टाइम आपने इंजेक्शंस दिए, सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू टेक। नाउ दिस इज बेसल बोलस रिजीम, इसमें आपने रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन दिया ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपने दिया एट नाइट टाइम। So multiple injections were given. Now, what are the advantages and disadvantages of these two regimes? This can be asked. Clear? What are the advantages and disadvantages? Split mixed regime के क्या advantages हैं? Less number of injections, more convenient to take, but disadvantages? Yes. So that is the disadvantage with split mixed regime. वहाँ रेगुलर इंसुलिन आपने इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के उसी बेस पे पूछा है, रेगुलर इंसुलिन को आपने इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन के साथ कंबाइन किया, उसको ब्रेकफास्ट से पहले दे दिया, लंच डिनर से पहले दे दिया। तो पर उसमें डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? पोस्ट प्रैंडियल में भी हाइपरग्लाइसीमिया अच्छे से कंट्रोल ना हो, पीक इफेक्ट की वजह से आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, लेटर नाइट टाइम आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया कंट्रोल नहीं हुआ। बेसल बोलस रिजीम के साथ क्या है? मल्टीपल इंजेक्शन, दैट इज द इनकन्वीनियंट, टाइट कंट्रोल ऑफ glucose level is there, so the chances of hypoglycemia can also be there, but there is more stable control. Then coming to the diabetic ketoacidosis, this is an emergency situation which usually occurs in type 1 diabetes due to insulin deficiency because of the ketone bodies formation. So what you need to give? Regular insulin. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? रेगुलर इंसुलिन, बोलस डोज 0.1 यूनिट पर केजी एज अ बोलस डोज आपको इंसुलिन देनी है, एंड देन यू कैन गो फॉर द इन्फ्यूजन 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। सेटिस्फैक्ट्री कब है? व्हेन देयर इज 10% डिक्रीज एवरी आवर, ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन 10% डिक्रीज एवरी आवर, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, अदरवाइज यू हैव टू डबल द रेट। क्या रेट दे रहे हो आप? इनिशियली 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर दे रहे हो, लेकिन अगर 10% डिक्रीज नहीं है पर आवर में, देन यू हैव टू डबल द डोज। 4 to 6 आवर्स के अंदर इट शुड रीच टू 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यू हैव टू गिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट, नॉर्मल सलाइन यू हैव इंट्रोड्यूस 0.9% ऑफ द नॉर्मल सलाइन, 1 लीटर आपने स्टार्टिंग में दिया, एंड देन फॉर 1 आवर, बट देन यू हैव रिड्यूस टू half normal saline for 4 hours. Now this, आपको जब आप fluid replacement करते हैं तो क्या monitor करते हैं? And accordingly you give the fluid replacement. BP, heart rate, yes, urine output क्या आ रहा है? Then accordingly you will monitor the fluid replacement. ठीक है, तो उसको आपने monitor करना है, and you have to give the fluid replacement. 300 मिलीग्राम पर आवर पे आ गया, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे आपकी शुगर आ गई है, तब आपको उसको रिड्यूस कर देना है। ठीक है, देन यू हैव टू गिव, रेट इज रिड्यूस टू 2 to 3 यूनिट्स पर आवर। बहुत जल्दी से एकदम से शुगर लो नहीं करनी है, अदरवाइज क्या होगा? बहुत जल्दी शुगर लो कर दी तो क्या होगा? You have to gradually lower the sugar. Yes. Otherwise, आपके brain जो है, it is adapted to the high sugar level. ठीक है, तो it will go into hypoglycemia. अगर आपने एकदम से sugar लो कर दिया तो. So you have to gradually lower, तो 2 to 3 units per hour आप कर दोगे उसकी rate, जब 300 milligram per deciliter पे आ जाएगी. Potassium replacement have to be done आफ्टर 2 to 3 आवर्स। जब आप इंसुलिन देते रहोगे तो क्या होगा? जब कीटोन बॉडीज भी कम हो गई हैं, फिर क्या होगा? पोटेशियम विल आल्सो शिफ्ट टू इनसाइड द सेल, सो दिस में लोअर द पोटेशियम लेवल, सो यू हैव टू गिव 10 to 20 मिली इक्विवेलेंस of the potassium replacement has to be done, but check it and then give it.
sodium bicarbonate, again you have to check the pH. pH has, if you have to give the sodium bicarbonate, but you have to check it that it should be less than 7.1. When 7.1 tak aa gaya hai, then you have to stop it. Antibiotics you have to give, phosphate also you need to give, but again with monitoring. This is the treatment for diabetic ketoacidosis. Okay, repeatedly this question is asked, what is the treatment of diabetic ketoacidosis? You have to write all the points. It's an emergency situation, that is diabetic ketoacidosis, common in type 1. Hyperosmolar coma. Type 2 diabetes. Here the main is not the insulin deficiency, but there is insulin resistance. Sugar level is around 600 milligram per deciliter, so it increases the osmolarity to more than 320 milliosmoles. Occurs in elderly type 2 diabetes. Now because of high osmolarity, what you need to give? What is the difference? Faster fluid replacement. You have to give prophylactic heparin therapy, anticoagulants you have to give. You need to treat the precipitating factors like infection or any other precipitating factor is there that you have to treat it. Insulin requirement is less as compared to the DKA. Less potassium replacement has to be done because less insulin requirement is there, and alkali is generally not required in this case. That is the difference from diabetic ketoacidosis. Sugar is very high. Now this causes dehydration of the cells. So what you have to do is you have to give a faster fluid replacement. There is tendency of coagulation, so you have to give an anticoagulant. That is the main difference from, and there less insulin requirement is there with hyperosmolar coma as compared to diabetic ketoacidosis, which occurs in type 1. This occurs in type 2 diabetes. So then there is insulin resistance. So just all these factors are there. So you have to, that's why lifestyle modification is needed. There's a chronic factors, then there is acute insulin resistance. Acute कब हो सकती है? Stressful situations can lead to acute insulin resistance. So what you need to give is overcome the precipitating factors and increase the dose of regular insulin. There is another side effect of insulin as an insulin resistance. With less purified insulin. That occurs because of immune reaction. ठीक है, इम्यून रिएक्शन, तो वहां पे आपको क्या देना होगा? इम्यूनोसप्रेसेंट. ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ द इम्यून रिएक्शन, because of the less purified insulin, switch to the human insulin, and another thing is immunosuppressants you need to give. So this is already we have discussed newer insulin advantages. All these are the various kind of delivery devices. You have the pre-filled syringes, pen devices, inhaled insulin which is coming now, that is Alfreza, but you have to be careful in asthmatic patient or COPD patients. Insulin pumps are there. Again, these pumps you have to, there is a continuous insulin supply is there, and more preferable in type 1 diabetes. But again, you have to be careful with the device, infections and other things. So it is not that much feasible. Implantable pumps is also there. Intraperitoneal, oral and rectal route has also been explored. So there are some questions. Insulin release from pancreatic beta cells is augmented by the following except. Insulin release from the pancreatic beta cells is augmented by the following except.
यस, किससे ऑगमेंट हो रही है इंसुलिन रिलीज? कीटोन बॉडीज स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज. यस. ग्लूकागॉन, glucagon stimulate the insulin release. Yes, glucagon stimulate the beta cells and the delta cells. Vagal stimulation stimulate the insulin release. Alpha agonist, it inhibits the insulin release. That is the predominant effect. Adrenergic predominant effect is it inhibits the insulin release. Glucose entry into the cells of the following organ or tissue is highly dependent on the presence of insulin. Brain, liver, adipose tissue or kidney. Highly dependent on the presence of insulin. Yes, adipose tissue. In diabetic patient, round-the-clock tight control of hyperglycemia achieved by multiple daily insulin injection or insulin pumps. Prevent macrovascular disease more effectively is recommended in all type 2 diabetes patients, is associated with higher incidence of hypoglycemic reaction. Both A and C are correct. Yes. Answer is D. D. Yes. What is the function of basal insulin in the basal bolus regime? To cover the insulin needs for meals, to cover the body insulin needs throughout the day and night, to treat hypoglycemia, to increase glycogen storage. B. Which factor can affect the absorption rate of subcutaneously injected insulin? Which factor can affect the absorption rate of the subcutaneously injected insulin? Yes, injection site can affect the absorption. Exercise, yes, it can affect the absorption. Temperature, yes, massage हम करते हैं, it improves the blood flow. Temperature will improve the blood flow, and therefore the answer is all of the above. Which of the following is a long-acting insulin? What is the primary advantage of using insulin analog over regular human insulin? Lower cost, reduced risk of allergic reaction, more predictable absorption and action, longer shelf life. More predictable absorption and action. What is the main side effect of insulin therapy that patient need to be aware of? Which insulin regime mimics the natural pattern of insulin secretion most closely? Basal bolus regime. Any doubt in this? Which of the following is a potential complication of rapid correction of hyperglycemia in diabetic ketoacidosis? Not hypoglycemia, that is cerebral edema. There is a possibility of cerebral edema which can occur if you lower the glucose. Hypoglycemia is the condition where the blood glucose level is lowered. ठीक है, यहाँ पे आपने low करा है, but that is not hypoglycemia, but because you have lowered the blood glucose level, it may go for cerebral edema.